ریسرچرز نے بہت کام کیا ہے کہ جو کلچرل ایسپیکٹس آف پاور، یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کلچر کو سمجھا جائے جہاں پر وہ پاور کو اینالائز کیا جا رہا ہے. سو کلچرل ڈائمینشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بھی سوسائٹی یا ملک یا آرگنائزیشن میں جب آپ پاور کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کی کلچرل ڈائمینشن کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس چیز کو بڑا جسے کہتے ہیں کہ اسٹڈی کیا گیا ہے کہ جو کلچرلی نرچرڈ ویلیوز اور بلیفس ہوتی ہیں ٹو اچیو سرٹن گولز تھرو یوز آف پاور، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس میں کلچرلی نرچرڈ کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو تھیوریٹیکلی کہتے ہیں کہ جی ایماندار ہونا چاہیے اور آپ کو آنیسٹی سے کام کرنا چاہیے اور آپ کو میرٹ کے اوپر جو ہے سب چیز ہونی چاہیے، یہ تو ایک کہنے کی بات ہے. لیکن کلچرلی نرچر آپ کیا کرتے ہیں؟ نرچر کا مطلب ہے کہ لوگ جو جس چیز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جس پروسیس میں جو چیز وہ آبزرو کر کے اور خود ایکسپیرینس کر کے اس معاشرے میں جس چیز کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاور کو لوگ کس طرح سے یوز کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں، تو وہ اس کی کلچرل ڈائمینشن ہوتی ہے. سو یہ نہیں ضروری کہ، اور وہی بلیفس اور ویلیوز ہوتی ہیں جو ایکچولی لوگ کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ جو کتابوں میں لکھا ہے. تو اس میں اس چیز کو بہت اسٹڈی کیا گیا، ڈفرینٹ پہلو سے دیکھا گیا ہے. ریسرچرز نے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا کہ جو ورٹیکلی آپ کہہ لیں کہ سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ جو کمپیٹیٹو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اس میں پاور کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. پھر سوسائٹیز ایسی ہیں جیسے جاپنیز سوسائٹی ہے، وہاں پہ یا سویڈش سوسائٹی ہے. جاپنیز سوسائٹی میں لوگ کمپیٹ اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پیچھے رکھ کے کمیونٹی کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ پریفرنس دیتے ہیں. اگر آپ سویڈش سوسائٹی میں دیکھیں تو وہاں پر لوگ کمپیٹیٹو تو نہیں ہوتے امریکن سوسائٹی کی طرح سے، کیونکہ وہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے. لیکن جہاں پہ وہ کلیکٹیونیس آتی ہے جیسے سویڈش سوسائٹی ہیں، وہ انوویشن اور نیو آئیڈیاز کے جو ہیں ان کو پریفرنس دیتے ہیں. سو اس طرح کا کمپٹیشن نہیں ہوتا جسے کہیں کہ کٹ تھروٹ کائنڈ آف اے کمپٹیشن ان سوسائٹیز وچ آر انڈیویجولسٹک. اس طرح سے آپ ڈفرینٹ کلچرز میں دیکھتے ہیں کہ پاور کا استعمال جو ہے وہ کس طرح سے، اور اس سوسائٹی کی ویلیوز اور بلیف سسٹم کیا ہے، اینڈ ہاؤ ڈو سوسائٹیز یوز پاور ٹو اچیو گول. Are they using it for their personal, using power to achieve their personal interest, or are they using power to for collective good, for good of everyone? So یہ ایک ڈائمینشن ہے جس کو اسٹڈی کیا گیا. اور پھر پاور کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے؟ ویلتھ ہے، پریسٹیج ہے، اسٹیٹس ہے، یہ تمام پاور کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں جو سوسائٹیز ہے. اگر ہم یہ بھی ایک کہنا چاہیے، ویلیوز کہہ لیں آپ یا بلیفس کہہ لیں، کہ سوسائٹی میں گریڈ کتنی ہے، ہپوکریسی کتنی ہے، انجسٹس کتنا ہے، یعنی کتنے لوگوں میں جو ریچسٹ ہیں اور جو پورسٹ ہیں ان کے انکم گیپ کتنا ہے. سو یہ تمام چیزیں سوسائٹی کی ویلیوز اور بلیفس کو بتاتی ہیں. اور پھر جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں اور جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. Is it a client-patron relationship, patron-client relationship, or is it a equal kind of a relationship? So یہ تمام چیزیں، dishonesty, commodification of values, everything can be sold, is saleable. All these things are different, determine what the values of society are, and these are studied by researchers. One of the local scholars, Ilhan Niaz, wrote a book on culture of power in Pakistan, and he studied this culture of power from 1947 to 2007. So he came up with a framework to understand the culture of power in Pakistan, and he called this as
the state in the subcontinent, and there were other such states as well historically, which were administrative state, and these were called continental bureaucratic empires. And the king was the ruler who owned the land, and every property belonged to the king. So rulers either exercised universal proprietorship on land or over other assets. Yeah, that means उनका पूरा control होता था. Land सिर्फ बादशाह का था, king का था. और या था the kings, they aspired to do so and was hostile to the free accumulation of property. यानी private property के जो है वो इतने favor में नहीं थे, and everything belonged to the king. A ruler had arbitrary power. Arbitrary के मतलब ये किसी कानून के तहत वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते थे, और उनको ज़्यादा जो था वो पर्सनल लॉयल्टी के ऊपर. अब सब कॉन्टिनेंट में देखिए, जो पर्सनली लॉयल था किंग से, उसके लिए बहुत से बेनिफिट थे. ये पर्सनल लॉयल्टी ज़्यादा अहमियत रखती थी इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी के निस्बत. सो दिस हैड मोर प्रेफरेंस. स्टेट हैड आर्बिट्रेरी पावर ओवर सोसाइटी, यानी कोई कानून नहीं था जिसको सब फॉलो करते थे. एक ऑर्डर या डिक्री या फरमान अगर सुबह को हुआ है तो वो तब्दील होके शाम को मुख्तलिफ हो सकता था. सो सोसाइटी को भी एक आर्बिट्रेरी पावर, ये कॉन्टिनेंटल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है. यहाँ पे स्टेट के पास सोसाइटी को मैनेज करने के लिए आर्बिट्रेरी पावर थी. The subcontinent, being a continental bureaucratic empire, had power which was centered around the king, and so the loyalty was with the king, not with the institution or not with the rules. In other words, what we are saying is कि power जो थी वो बड़ी centralized थी during Mughal period. So एक बड़ा cultural aspect है power का जिसको समझना ज़रूरी है. Britishers ने एक institutional framework दिया, administrative elites थे, they were men of notable intellectual status, और ये जो institutional framework था, this was based on principle of pay, prestige, accountability and esprit de corps. इन principles के ऊपर ये बनाया गया, और इसमें यूं तो नहीं कहा, idealize इस तरह से नहीं किया जा सकता कि वो बेहतरीन सिस्टम था, लेकिन उसको हम ये कह सकते हैं कि जो भी उसने अपना कॉलोनियल पीरियड में जो भी फ्रेमवर्क था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो काफ़ी हद तक आर्बिट्रेरीनेस को रिड्यूस करता था. ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल आर्बिट्रेरीनेस नहीं थी, लेकिन एक कानून था, एक लॉ था, रिटन लॉ था, जिसके सब मातहत थे, उसके मुताबिक काम किया. सो वहाँ उसकी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी वो एक कैपेबल ब्रांच थी, और उसके पास एक they achieved the goals, they accomplished their duties which they were assigned to. So this institutional setup, as soon as Pakistan got independence, it started slowly giving way. यानी ये थोड़ा सा ये गिरना शुरू हो गया. वो फ्रेमवर्क जो वहाँ जो इनहेरिट किया था, चूंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को हम समझ रहे हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि इस कल्चर में एक आइडिया आया जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल का था, लेकिन जो एक सदियों पे मुहित मिजाज था वो यहाँ का यही था कि पैट्रनेज होनी चाहिए. आप अगर अपने सीनियर से लॉयल हैं, अगर आप उसके नज़दीक हैं, तो आपको तमाम बेनिफिट्स मिलेंगे. सो योर लॉयल्टी इज़ टू योर सीनियर, योर लॉयल्टी इज़ टू द किंग. सो दिस स्टार्टेड गिविंग वे. सो द पावर जो कल्चर था, पावर का कल्चर सब कॉन्टिनेंट, ये सेंट्रलाइज्ड है. सब उसकी निगाहें उसकी तरफ होती हैं जिसके पास पावर है. नाउ इसमें ये भी कह सकते हैं कि चाहे वो इंडिविजुअल, सीनियर मोस्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में है, या कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास किसी न किसी तरह की पावर ऑर्गेनाइजेशन में है, लोगों की निगाहें उसकी तरफ होती हैं. ये नहीं कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहकर वो जो ब्यूरोक्रेटिक लीगल रैशनल अथॉरिटी है उसकी पोजीशन में रहते हुए आपने काम कैसे करना है, ये नहीं है, बल्कि पावर को एक सेंट्रलाइज, जिसके पास जो पावर है सेंट्रलाइज्ड है, उसकी तरफ, उसकी इंस्ट्रक्शंस को देखें और उसकी तरफ देखें.
सिविल सर्विस कैपेसिटी जो थी ग्रेजुअली इस तरह से, चूंकि पैट्रोनेज का सिस्टम था, इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट्स थी या सिविल गवर्नमेंट्स थी, क्योंकि सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज था। ये देखते थे उसकी तरफ जहाँ पे ताकत का जो सरचश्मा है उस जगह पे, और ये कोशिश होती थी कि चूंकि पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, पर्सनलाइज यूज ऑफ पावर, यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज जो है, चूंकि अकाउंटेबिलिटी जो है, जो कि एक बहुत अहम पिलर था कॉलोनियल पीरियड का, ये पिलर जो था, ये चूंकि ये ख़त्म हो गया और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें तो रहीं, लेकिन सर्विस डिलीवरी ख़राब हो गई, अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई, और देखना शुरू कर दिया कि हम जहाँ पे ताकत है वो हमें क्या देंगे। सो इट काइंड ऑफ ए गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो है शुरू हो गया बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। ये एक फिगर है, इसमें ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगी, सेंट्रलाइजेशन होगी और आइडियोलॉजिकल डिल्यूजन्स होंगे, वहाँ पे जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। यानी जैसे मैंने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज ए कॉलोनियल पीरियड हु प्रोवाइडेड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, लेकिन एक कल्चरल एस्पेक्ट है कि आप अथॉरिटी को एकदम सबमिट करते हैं और अथॉरिटी की तरफ देखते हैं। दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि एनवायरमेंटल कंडीशन, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस का से मुराद वो कंडीशंस हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जिस तरह से लोग इंटरैक्ट करते हैं, जिस तरह से पावर और पीपल्स वेस्टेड इंटरेस्ट आर इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, दैट environment conditions in the organization, environment conditions in the political arena. So politics जो है वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, और ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ पावर को। आपके पावर एक्सप्लेन की जाती है इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब इसी तरह से जब हम इसको देखें कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू आर्बिट्रेरी रूल हो, यूं कह लें कि अगर प्रोलॉन्ग्ड अथॉरिटेटिव रूल हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ गवर्नेंस इस्तेमाल करें, और इसमें वो जो अदारे हैं जिनको अपनी काम करने हैं उनको वो फ्रीडम ना हो कि वो वही काम करें जिस लिए वो अदारे बनाए गए हैं, तो इसका इफ़ेक्ट जो है कुछ इस तरह से होता है कि लोग, देयर इज़ एन एटमाइजेशन इन सोसाइटी, यानी छोटे छोटे जो है वो ग्रुप्स और यूनिट्स बन जाते हैं। एपैथी हो जाती, यानी लोग इनडिफरेंट हो जाते हैं चीज़ों से। फेटलिज्म कहते हैं बस इसी तरह से सब चलता रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आने की। डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, पीपल बिकम रिस्क एवर्स, और एक्सट्रीम ग्रीड, जिसको जो जिसके हाथ आए, जहाँ से आए, वो उससे हासिल करने की कोशिश करता है। अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हिस्टोरिकली हम बहुत सी चीज़ों को एग्जामिन करें, तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो अगर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में पावर को हम देखें तो ये देखें कि इसमें आर्बिट्रेरीनेस भी है और सेंट्रलाइजेशन भी है। अगरचे रीसेंट जो स्टेप्स हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन और डेवोल्यूशन की तरफ हैं, लेकिन डिस्पाइट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर of the duties and responsibility to provinces and to the local government, there is still a tendency to centralize or to control power. So this is the cultural aspect of power. Despite all these structures that we have, which look very modern, the culture of power is such that it's a client-patron relationship that exists between the seniors and juniors in the organization.